Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivative outlook. Nifty index witnessed gap-up opening and registered the days at 16,287 levels. Overall, the index was up by 1.43% to close at 16,278. What we saw on the daily chart was after the 5 to 6 bars of negative bars, index has now closed in the green and strongly trading about this immediate resistance zone of 16,100 levels. We reiterate and maintain that above 16,100, the next levels to watch are 16,500, 16,600 levels on the upside. However, on the lower side, the demand has now shifted from 15,800 to 16,100 levels. Going to the Bank Nifty, we saw a long build-up in Bank Nifty in yesterday's session, and we believe that Bank Nifty is one of the will be the one of the outperformer in the coming trading sessions. Some of the private banks like Axis, ICICI Bank, and to some extent HDFC looks positive for the bounce back. Whereas some of the PSU banks like Bank of Baroda, SBI, and Canara Bank should outperform in the coming trading section. On the sectorial front, the Nifty FMCG and Pharma was closed marginally in the red, witnessing some selling pressure. Whereas the IT and metals closed in the green, showing some possibility of the bounce back. Overall, the advanced decline ratio was positive, which shows that the trend and the momentum of the market is strong. On the derivatives trend, Nifty futures open interest saw short covering to the tune of 6.4% reduction, which was a reduction of 0.92 million shares, with total outstanding positions currently at 13.46 million shares. The advanced decline ratio was positive by 165 on the stock on the gaining side and 35 stock on the losing side. Nifty PCR saw an uptick to the close of 1.36 as compared to its previous close of 1.21 levels. Major additions happened in the put options front at 16,100 and 16,200 strikes, with additions of 4.19 million and 5.4 million shares each. While on the call option front, 16,300 and 16,400 strike price saw additions of more than 1.08 million shares and 1.13 million shares each. Bank Nifty futures total open interest stands at 27.01 lakh shares against 25.18 lakh shares on as compared to the previous day. Thus indicates that there was a long build-up seen in the index, which with additions of in open interest by 7.3%, that is 183,000 shares. Top 5 long additions were seen in Persistence, AU Bank, Federal Bank, Coforge, and HAL. While 5 top short positions were built in Balkrishna, HDFC, Trend, Exide Industries, Colpal. This was the short version. The overall support for the Nifty comes close to 16,000 to 15,900 levels on the lower side, and resistance can be seen at 16,500 on the higher side. Looking at the FI data, in cash as well as in cash, FIs and DI both were the net buyers. Whereas in FNO, also the index and in options, they were the net buyers. This suggests that they are slowly reducing their short positions in the market. The derivatives call for the day is we are recommending a buy in HL in the range of 1774 to 1784. The stop loss will be 1740 for the target price of 1857 to 1860. And on the technical front, we are recommending a buy in ABFRL in the range of 260.50 to 261.50 with a stop at 255.50 for the target of 271 for 5 to 7 days. That's all from technical. Over to Archana, madam. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with IndusInd Bank. So, the private sector lenders has said that the board has approved raising of funds up to 20,000 crore through the debt securities on a private placement basis. The fundraising is subject to approval of the mergers of the bank. Coming to Tube Investment of India, the company's arm has acquired 65.2% stake in IPL Tech Electric. The acquisition cost is close to 246 crore.
and it is a startup engaged in manufacturing and sale of electric heavy commercial vehicles. In addition, the company had decided to make a further investment of up to 150 crore in subsidiary, which is TICMPL, and make a provision of intercorporate deposit of an amount 100 crore to TICMPL. On Jubilant Foodworks, the subsidiary Jubilant Foodworks Netherlands has increased its stake by 2.06% in DPEU to 44.75%. Now, DPU is the exclusive master franchisee of Domino's Pizza brand in Turkey, Russia, Azerbaijan, and Georgia. On Nelco, the company has clocked 7.8% YY growth in consolidated profit at 4.7 crore for Q1 FY23, and it was supported by the robust top line. Revenue grew by 48% to 81.6 crore in this quarter. On Surya Roshni, the company has received orders worth 91.2 crore for API 5L grade 3 LP coated pipes from Bharat Gas Resources. We believe that though the order size is small, going forward, such further more orders can be expected, and we remain positive on Surya Roshni in the pipe segment. On Mangalore Chemicals, the company has shut down its phosphatic fertilizer plant due to non-availability of raw materials. So that comes as a negative on the company's front. On Hindalco Industries, the company entered a strategic alliance with Aqueous for long-term collaboration and joint business development in the commercial aerospace sector. A positive development on Hindalco's space. On Indian Oil and NTPC, the two companies have signed an agreement to form a joint venture that will address power requirements of upcoming projects of Indian oil refineries. On the telephone carriers front, Bharti Airtel, Reliance Industries, Vodafone, and Adani. So Reliance Jio has deposited 140 billion earnest money for airwave bid, while Vodafone India has deposited 22 billion. Bharti Airtel has deposited 55 billion, while Adani Data deposited 1 billion earnest money for the airwave bid. So this is for your 5G auction going forward. On Mastic, the company has made an acquisition of Metasoft Tech for dollar of 76 million at an enterprise value to sales at 2.6x. It will contribute close to 10% to its top line. Talking about Metasoft Tech Solutions, it is a US-based company and it is an independent Salesforce consulting partner in the American Southwest region. So this comes as a positive. We need to see how Mastic will be, approaching on this acquisition and how the JV will or how this acquisition will aid to your sales growth going forward. But as of now, looks positive on Mastic's front. And talking about Cyient has announced partnership with Honeywell to manufacture the aviation industry's first cloud-connected cockpit system, namely the Honeywell Anthem. It will be driven by a versatile software platform that can be modified for virtually every type of aircraft, including passenger and cargo planes, business jets, helicopters, general aviation planes, as well as the fast developing class of advanced air mobility vehicles. So comes positive on the company's front. And lastly, on ACL Tech has signed a multi-year deal with Dutch health and nutrition multinational company DSM. SCL will offer digital transformation solution for DSM by creating a seamlessly connected group-wide digital work environment. The company will implement IT service delivery solution for approximately 1,800 end users across 200 sites in more than 50 countries. Again, a positive development on SCL's front. So that's it from my side. I would hand it over to Hitendra for further updates. Thank you, and over to you, Hitendra. Yeah, thank you, ma'am, and good morning, everyone. We'll see more further updates. Zydus Life Sciences has gotten approval from US FDA. That is for the marketing their antifungal topical solution, that is efinaconazole. And this would be the Zydus worldwide from DBM CC Labs, and the US FDA is approved for that. Secondly, if you see the Adani Wilmar has also cut the cooking oil prices by 30 per liter, and this is the second reduction in the month after the falling global rates of palm oil. And the Fortune brand owners also nearly has 20% market share in this segment also. Mahindra has also said that it has hiked its stake in the Finland-based Sampo or Rosneft by 100%,
an acquisition of residual share for over 35 crores. M&M also said that it has also option to exercise the purchase agreement for the 1,300 equity shares of Sampo Rosneft. And thirdly, if it's in Coal India Limited also cancelled its tender for the short-term import of coal from Adani Enterprises, which has emerged as the lowest bidder for a medium-term tender sourcing the additional 6 million tons capacity from overseas. From the Daya Energy has also quoted 2,000 per ton less than the rate quoted by Adani Group firm. Coal India also in this meeting held on July decided to cancel this tender for 2.46 million tons from BT Bara Daya Energy. Thirdly, if we see Prestige Groups have given their sales data, their sales have been excellent on the base of COVID pandemic. If you see, it was only 733 crores, but this time they had posted 3,000 crore of sales. Out of the 3,000 crore of sales, 737 crores of sales are from the Mumbai region and the rest from the Bangalore region. And total, they had developed 3.63 million square feet volume with an average realization of 8,298 per square feet. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Yeah, thank you, team. Fantastic collection and everything from Prestige. Even collections was up by 110% and sales was up by 3 times. You know what Hitendra was saying. Now Prestige came with a wonderful sales number. Even Puravankara, now which is again Bangalore based. Now their operational update, they said that the highest ever sales per quarter. They have done 513 crores, which is the quarter which is ended, which is higher by 64%. And volume wise also it is higher by 62%. And realization was higher at 7,546 square feet, rupees per square feet. And if you notice, Kolte Patel, Oberoi, all real estate companies numbers are good. I think real estate rally is pending, and even banking and NBFC stocks have started to perform. Yesterday, Chola Finance was nearing a breakout. ICICI Bank has given a breakout. So I think ICICI Bank can give at least 7 to 9% return in next 1 to 2 months. City Union Bank, ICICI Bank, Federal Bank, SBI, Can Bank, Bajaj Finance, M&M Finance, now even Dabur to an extent are looking very good. So I think there are any correction today weak opening could be an opportunity to buy these stocks. GSFC has said that there has been a forced shutdown on Urea 2 plant, which was operating at 105% capacity. It would take at least 13 days to come back again to operate if the quality test is completed on time. Only once the test is completed. So the production lost would be 10,400 metric ton of neem urea. So this is going to be a loss for GSFC. So no, I don't think we have to import. We have no other solution. L&T Realty signs up 3 projects worth 1 billion in prime location of MMR, that is Mumbai metropolitan region, for 4.4 million square feet. L&T also plans to add 5 million square feet for the next 5 years. Now, but for L&T, all these news can be good, but their revenue, margins and revenue are something which is very difficult to understand also. Ahluwalia contract total order book stands at 1,002 crores, and they have received 12 residential building at Sureshka Smart City Vasai, and a tower. That is 12 residential building is for 86 crores, and a tower for 53 crores. So, and yesterday I was watching a interview of Megamani Feinken, and I think it is there in the ICMS group. The management has said that they have commissioned 300 ton per annum CPVC resin. And this is something where at a high heat, even for chemical, it can be used. And there are only 5% which is manufactured in India. 95% of this CPVC resin is imported. So that is very important. They said next half 50% capacity
is possible. From next year, it will run at 100% capacity. And once the company, this project comes on stream, 400 to 450 crores higher revenue is possible from FY24. And the margin for the product will be at 28% because it is an import substitute. And already company has launched epichlorohydrin, and where the trial, the customers are taking trial, and the company has a vision. From currently it is 1,500 crore revenue. By 2027, they want to make the revenue 5,000 crores. This is what the management has said. Bank of Maharashtra came with the results. The advance is higher by 27% at 1,40,000 crores, and deposit higher by 12%. So CASA is 56%. Profit after tax higher by 117% at 452 crores, and NIM at 3.28. So the loan book is growing, whereas deposit is not growing, is what I can understand. Jindal Stainless Steel will provide 3,500 metric ton of stainless steel for 272 kilometer long Udhampur Srinagar Baramulla rail link, first ever railway project to use stainless steel. This is something unique, but we like Jindal Stainless Steel. There are a lot of news in this talk. I think one can look at this talk. In very interesting news, Hindalco, Fins Energy, IOC, everybody has partnership to revolutionize aluminium air battery for EV. This is something they say is going to be a game changer, and this aluminium air battery will have double the capacity of the batteries, electric battery we use, and the cost will be 50% of that. And the important thing here is the EV battery which today we are using. These are batteries where we need to import. And even if we have to manufacture in India, the raw material has to be imported. But if it is aluminium air battery, aluminium and cobalt, all these raw material are available plenty in India. So this is going to be something positive if this happens. EPFO is likely to approve proposal to enhance its investment in equity up to 20%. Currently, 15% is the investment done by EPFO, and meeting is scheduled on 29th and 30th July. And every year, the maturity they pay is almost 3 lakh crore. That means the investment is very huge. So this is going to be very positive for equity market. 5% increase in equity allocation, then the top 100 stock would see some action. And as Archana was saying about 5G auction, Adani has paid only 100 crore money. So that means Adani is not interested to compete with them, whereas Jio has paid 14,000 crores. So we need to understand, it is going to be a competition, a monopoly of Jio, whereas Bharati has paid only 5,500 crores. So Bharati Airtel and Jio will be the competition, but Jio is far ahead in their deposit which they have paid. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग एक कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. फर्स्ट जो अपडेट है वो इंडसइंड बैंक के ऊपर है कि इंडसइंड बैंक के जो बोर्ड है उन्होंने 20,000 करोड़ फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल किया है, और ये फंड रेजिंग डेब्ट सिक्योरिटीज और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से होगा. नेक्स्ट अपडेट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर. कंपनी अक्वायर करने वाली है 65.2% स्टेक इन IPL टेक इलेक्ट्रिक में, और ये एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो 246 करोड़ है. और ये कंपनी स्टार्टअप है जो मैन्युफैक्चरर सेल इलेक्ट्रिक हेवी कमर्शियल व्हीकल में. और इसके अलावा कंपनी ने डिसाइड किया कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगी 150 करोड़ की. सब्सिडरी जो कंपनी है TICMPL जो, और इसके अलावा कंपनी प्रोविजन भी करने वाली है जिसका डिपॉजिट अमाउंट रहेगा 1000 करोड़ कंपनी में. नेक्स्ट अपडेट है जुबिलियंट फूड वर्क के ऊपर. जुबिलियंट फूड वर्क्स की जो
नेदरलैंड वाली जो सब्सिडरी है जुबिलियन फूडवर्क नेदरलैंड JFN, उन्होंने स्टेक इंक्रीज किया है DPU में, जो जुबिलियन फूड की DP यूरेशिया NV कंपनी है उसमें, और अभी वो 2.06% से स्टेक इंक्रीज किया है और अभी वो 44.75 है। और जो ये DPUE कंपनी है जो एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजीज है डोमिनोज पिज्जा की ब्रांड है, जो टर्की में है, रशिया में है, अजरबैजान में है और जॉर्जिया में है। नेक्स्ट अपडेट है नैल्को के नंबर्स आए थे, रिपोर्ट्स किया है उन्होंने 7.8% ग्रोथ Q1 में, और जो प्रॉफिट है वो 4.72 करोड़ है। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 48% से, और कंपनी का अभी रेवेन्यू ग्रो होके 81.68 करोड़ है। और सूर्या रोशनी के ऊपर एक अपडेट है कि सूर्या रोशनी को एक ऑर्डर मिला है 91.7 करोड़ का भारत गैस रिसोर्स से। ये ऑर्डर की जो वैल्यू है बहुत कम है, बट ये जो ऑर्डर मिला है वो API 5L ग्रेड और 3 LPE कोटेड पाइप्स बनाने के लिए भारत गैस रिसोर्सेज से, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होगा 12 मंथ्स में। मैंगलोर केमिकल कंपनी है, उनके जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट्स है वो शट डाउन हुए हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है उसके कारण। हिंडाल्को इंडस्ट्री है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अलायंस एक्विस के लिए कोलैबोरेशन किया है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये दोनों बिजनेस डेवलप करेंगे कमर्शियल एरोस्पेस सेक्टर में। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन ऑयल और NTPC, दोनों कंपनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जो एड्रेस करेंगे पावर रिक्वायरमेंट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है इंडियन ऑयल रिफाइनरीज के। जो 5G ऑक्शन के ऊपर एक अपडेट है कि भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, वोडाफोन आइडिया और अदानी ने डिपॉजिट किया था, तो उसमें रिलायंस ने सबसे ज्यादा डिपॉजिट किया है 140 बिलियन, और इसके बाद वोडाफोन आइडिया 22 बिलियन, भारतीय एयरटेल 55 बिलियन और अदानी ने सिर्फ 1 बिलियन इन्वेस्ट मतलब एयरवेव बिड के लिए किया है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इसमें अदानी ने बहुत ही कम बिड किया था, तो हम समझ सकते हैं कि अदानी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ओवरऑल अभी कंपटीशन जो है वो जियो और भारतीय एयरटेल में है। जियो अभी मोनोपोली लग रहा है यहाँ से, बट जियो और भारतीय एयरटेल में कंपटीशन है। नेक्स्ट अपडेट है मैस्टेक के ऊपर। मैस्टेक ने मेटासॉफ्ट जो कंपनी है उसको एक्विजिशन किया है, जो वैल्यू है वो $76 मिलियन है, और ये अभी कंट्रीब्यूट करेंगे 10% जो इसका टॉप लाइन है उसके लिए। और जो ये मेटासॉफ्ट कंपनी है ये USA बेस्ड कंपनी है जो सेल्सफोर्स कंसल्टेंसी पार्टनर है अमेरिकन सॉफ्टवेयर साउथ वेस्ट रीजन में। नेक्स्ट अपडेट है सैंड के ऊपर। सैंड ने पार्टनरशिप अनाउंस की है हनीवेल के साथ, और जो हनीवेल कंपनी है जो एविएशन इंडस्ट्री में फर्स्ट क्लाउड कनेक्टेड कॉकपिट सिस्टम बनाने वाली है, और उसका जो नेम रहेगा वो हनीवेल एंथम है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। HCL टेक ने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डच हेल्थ न्यूट्रिशन मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, और ये ऑफर करेंगी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन और इसके अलावा सीमलेस कनेक्टेड ग्रुप वाइड डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। और HCL इम्प्लीमेंट करेंगे IT सर्विस डिलीवरी सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 18,000, और उनके जो यूजर्स है वो अक्रॉस 200 सिटीज में है और मोर देन 15 कंट्रीज में है। नेक्स्ट अपडेट है जिंदाल स्टेनलेस स्टील के ऊपर। जिंदाल स्टेनलेस स्टील ने सप्लाई करने वाली है 33,500 टन स्टेनलेस स्टील इंडियन रेलवेज उधमपुर श्रीनगर बलरामपुर रेलवे लिंक्स टनल प्रोजेक्ट के लिए जो जम्मू कश्मीर में होने वाला है। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर लॉन्ग है जो लिंक करेगा जम्मू एंड कश्मीर में। ये अभी तक का स्टेनलेस स्टील केबल ट्रेस इंडियन रेलवे का फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है। तो हम लोग को जिंदाल स्टेनलेस स्टील के ऊपर काफी न्यूज है, तो आप ये स्टॉक को देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है प्रेस्टीज ग्रुप के ऊपर। जो प्रेस्टीज ग्रुप के जो सेल्स के नंबर्स है तो उनके जो बुकिंग्स है वो 4 टाइम्स जंप हुए हैं, और ओवरऑल जो बुकिंग्स है वो अभी 3012 करोड़ है ड्यूरिंग दिस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल। सो उसकी जो डिमांड है वो बेटर है, और जो लास्ट टाइम जो थे वो सेम क्वार्टर में 733 करोड़ थे। नेक्स्ट अपडेट है ओवरऑल मतलब हम लोग देखें तो रियलिटी सेक्टर में ओबेरॉय रियलिटी, DLF, कुलदीप पाटिल इनके भी नंबर्स आए तो नंबर्स काफी अच्छे थे। तो आप रियलिटी सेक्टर्स मूव करने जैसा लग रहा है। तो ओवरऑल
आप रियलिटी सेक्टर देख सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग और एनबीएफसी जो सेक्टर है उसमें भी आप रैली देख सकते हो। तो बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक है जिसने अगर ब्रेकआउट दिया है तो 7 to 9% रैली आप यहाँ से 1-2 महीने में देख सकते हो। फेडरल बैंक है, कैनरा बैंक है, एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस है, एमएनएम फाइनेंस है, एसबीआई है। आज सपोज मार्केट नीचे खुलता है तो वीक ओपनिंग रहेगी तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी ये स्टॉक्स में। उसके अलावा नेक्स्ट अपडेट ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। कंपनी ने बोला है कि वो स्टेक फिनलैंड बेस्ड जो कंपनी है उसमें हाइक करने वाले और जो एक्विजिशन रहेगा वो उन्होंने कल ही अपडेट दिया है कि जो परचेस एग्रीमेंट है वो अक्वायर कर लिया है 1317 इक्विटी का। लास्ट अपडेट इज जाइडस लाइफ साइंस जो कंपनी है उनको अप्रूवल मिला है यूएस हेल्थ रेगुलेटरी से एंटी फंगल जो टॉपिकल सॉल्यूशन है उसके लिए। नेक्स्ट जीएसएफसी जो कंपनी है उनके जो यूरिया प्लांट है वो शट डाउन हो चुके हैं और ये 13 डेज लगेंगे कम बैक के लिए। उनका जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हुआ तो, और इसके कारण जो उनका प्रोडक्शन लॉस होगा वो 10,400 मेट्रिक टन्स के अलावा मतलब अराउंड रहेगा। एलएनटी रियलिटी ने भी एक एलएनटी रियलिटी ने एक अग्रीमेंट लाइक उनको डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है और लाइक वो एक्सपांड करेंगे बेसिकली मोस्टली मुंबई और थाने रीजन में। तो उनके पास अभी 3 प्रोजेक्ट्स है तो ये 3 प्रोजेक्ट्स अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो 8,000 करोड़ की है, बट उनका जो मार्जिन है वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट अपडेट है कि जो कल मिगमानी जो कंपनी है उनके जो मैनेजमेंट का इंटरव्यू सर ने देखा था तो ऑलरेडी वो ग्रुप में पोस्टेड है। तो जो ये सीपीवीसी पाइप मतलब सीपीवीसी जो कंपोनेंट है उसका जो मैन्युफैक्चर है वो 5% ही इंडिया में होता है, उसका जो अलावा जो बाकी का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पोर्ट होता है। तो ओवरऑल कंपनी ने बोला है कि वो 400 से 500 करोड़ लाइक रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 24 तक करेंगे। और उसके अलावा करंट अभी कुछ उनका 1,500 करोड़ है। सो ओवरऑल जो मार्जिन प्रोडक्ट रहेगा उसका वो 28% रहेगा और 5,000 करोड़ उनका ये करने का रेवेन्यू करने का नेक्स्ट लाइक अपकमिंग ईयर्स में उनका एम है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी नंबर्स आए थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स में जो इनकम है ड्यूरिंग क्वार्टर वो फेल होके 3,774 करोड़ है और ओवरऑल उनका जो एनपीए वो स्टूड है अभी 5,259 करोड़। और ओवरऑल हम देखें तो उनका लोन बुक ग्रो हो रहा है बट एनपीए इतना कुछ डाउन मतलब नीचे ही जा रहा है। देन नेक्स्ट अपडेट है हिंडाल्को के ऊपर। हिंडाल्को के और अलावा और जो कंपनी है उन्होंने एक ईवी बैटरी के लिए साथ में आके अग्रीमेंट मतलब लाइक साइन किया है। तो उसमें अप्रोक्स अभी जो ईवीज बनती है तो उसका जो इंपोर्ट होती है मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी एल्यूमिनियम और कोबाल्ट जैसी मटेरियल यूज करके सपोज एयर बैटरी एल्यूमिनियम एयर बैटरी करेंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो कम लगेगा। जो बहुत सारी जो एल्यूमिनियम और कोबाल्ट है जो इंडिया में अवेलेबल है तो ये एक पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द कॉन कॉल। हैव अ नाइस डे।